अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन। आज हम लोग एक सिंपल वे में चिकन मैगी नूडल्स बना रहे हैं। जी हाँ, बहुत ही डिफरेंट स्टाइल है और नवाब्स किचन के स्टाइल में और भी आसानी से बनाएंगे। चलिए। इसी बोनलेस चिकन को हम लोग बॉईल करने के लिए वाटर में डालेंगे। वाटर अच्छी तरह बॉईल हो गए बाद इसी में हम लोग जो नूडल्स बॉईल होते वक्त नहीं चिपकने के लिए उसमें ऑयल और सॉल्ट भी ऐड करेंगे। ऑयल के बाद इसी में हम लोग सॉल्ट भी डालेंगे। चिकन नूडल्स बनाने के लिए मेन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म होते ही इसमें हम लोग चॉप्ड जिंजर और गार्लिक ऐड करेंगे। इसी ऑयल में हम लोग पहले ही बॉईल करा हुआ बोनलेस चिकन रोस्ट करेंगे लाइटली। नेक्स्ट हम लोग इसी में ही फाइनली चॉप्ड कैबेज ऐड करेंगे।
कैबेज के बाद हम लोग इसमें फाइनली स्लाइस्ड कैरेट भी ऐड करेंगे। कैरेट के साथ साथ हम लोग इसमें कैप्सिकम ऐड करेंगे। इन सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करे बाद हम लोग इसमें वाइट विनेगर भी डालेंगे। नेक्स्ट हम लोग इसमें रेड चिल्ली सॉस ऐड करेंगे। रेड चिल्ली सॉस डालते ही इमीडिएटली हम लोग इसमें ग्रीन चिल्ली सॉस भी ऐड करेंगे। रेड चिल्ली सॉस और ग्रीन चिल्ली सॉस ऐड करते ही हम लोग इसमें टोमेटो केचप भी ऐड करेंगे। इन सारे इंग्रेडिएंट्स के बाद हम लोग इसमें ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे। फाइनली इसमें हम लोग पहले ही बॉईल करा हुआ नूडल्स इसमें ऐड करेंगे।
आज इन सभी लोगों को चिकन नूडल्स देख के हमें बहुत ही अच्छा लगा। ये वीडियो देख के आपको कैसे लगा हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। और इस सर्विस और ये काम कंटिन्यू करने के लिए आपका सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है। हमें सपोर्ट करने के लिए 786guardfoods@gmail.com पर मेल करिए। नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने तक हमारे लिए दुआ करिए। अल्लाह हाफिज़।